Good afternoon, dear students, and your most welcome is in English online class. Students of 9th and 10th, this is as much important for both, but especially I am here for 9th. So students, during last session, we completed active passive voice and tense. Both we have completed, and in this session, I am going to complete some of the writing skills that is very useful to all the students. I would like to tell you in Hindi that कि पिछले segment में हमने tense सीखा था और active passive voice सीखा था, and in this segment I am going to tell you about how to write an application. Application प्रार्थना पत्र को कैसे लिखते हैं. I'll tell you about the format. Format means उसका प्रारूप क्या है, इसको कैसे लिखते हैं. So now see how to write an application. That is very important for everyone, for any student, for any person who is working, who needs support from anywhere. कि जो भी काम कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना आना बहुत जरूरी है, and especially it is in your syllabus, so you have to be very conscious about it, how to write. Firstly, know that this is the format and the word limit, कि in how many words we have to write it. Word limit may be 100 to 120 words. Okay students, keep remember. How to start? What should be write first? पहले हमको क्या लिखना चाहिए? तो firstly, we have to write receiver's designation. Who is receiver? That is going to receive the application. जिसको आपने application लिखा है, जिसको ये application मिलेगा, वो receiver है. तो receiver का designation क्या होता है आपका? post. Okay, कौन से पद पर है? Suppose that you are going to write an application to the principal. It may be to your class teacher. It may be to the junior engineer. It may be to the bank manager. There are so many persons to whom you can write. Anyone can write the application to everyone. Receiver's designation, तो जो जिसको आप भेज रहे हैं ये application, what is that designation? What is the post? Suppose that you are going to send a bank manager, so you will write the manager. What will you write? The manager. After that, you have to write name of institution. I have written here name of institution. Suppose that you are a student and you are going to write an application to the principal and you need a leave. Generally, you write for the leave. कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अपने क्लास टीचर को लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं कि यू नीड अ लीव जनरली. तो व्हाट यू हैव टू राइट? फर्स्टली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अमोलचंद पब्लिक स्कूल. यू कैन राइट ओके ACPS, and otherwise when you are going to write an application to the bank manager, whatever the name of the bank, it may be a Bank of Baroda, it may be Canara Bank, there are so many banks that you can write the name. So you have to write the name in the capital letters. Keep remember, use proper noun, that the application could be visible and clear to all of. कि बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में आपको कैपिटल लेटर में बैंक का नेम लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है. तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है. ओके, हियर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू आर गोइंग टू राइट एनी इंस्टीट्यूशन, एनी कंपनी, एनी होटल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आपका हो सकता है, whatever I tell, the junior engineer. After that, you have to write address, and keep remember, whenever you are writing the address, don't forget to write the name of district also. Suppose that your district is Hathras, then you will make a bracket, then you will write in bracket, then you will write the address where you are sending. Suppose that you are sending to Aligarh, है ना, so what is the district you will write? Suppose that you are writing to Sikandra Rao, then Hathras. In such a manner, you have to complete these 3 lines. Okay? And whenever you start to writing, जब आप लिखना start करते हैं तो आपको क्या करना है? Just leave 1.5 inch here. Okay? Suppose that this is the margin of your notebook, margin of any paper on which you are writing, जिस पर आप लिख रहे हैं, तो उसमें 1.5 inch का margin के अलावा 1.5 inch का space छोड़िएगा. Then you start to write. So these 3 lines are completed. Okay?
Now move forward. ये this is the symbol of arrow and this place it means you have to leave a gap, you have to leave a line. इसका मतलब है कि आपको एक लाइन को ड्रॉप करना है, छोड़ना है. Then you will write subject. Okay, how to write subject? Suppose that you are going to write application for it may be for a leave. So you will start like application for leave. Okay, this is the way to write. So after leaving a line, you will write application for leave. Then you have to drop a line once again. एक बार फिर से line छोड़िएगा. Number 5, you will write salutation. What do you mean by salutation? Salutation, the person whom you are addressing. Addressing, it means संबोधन करना किसी को. Suppose that sir, or it may be ma'am. Okay. So you will start like sir or ma'am. You will write only one salutation. Then you will start the content. Okay. So content punchline. What is the punchline? Punchline means opening line. How to start? We start like this. With due regards, I have. Then you will continue. With due regards, I have to say, I have to state that this line is compulsory. I have to state. Okay. After that, you will write the complete reason. What is the reason? Why are you writing an application? कि आप application क्यों लिख रहे हैं? उसका reason क्या है? But don't forget to write the punchline with due regards. I have to state that. ये एक punchline अपने दिमाग में आप बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए, सेटअप कर लीजिए, एस्टैब्लिश कर लीजिए. सो आई थिंक द डे इज नॉट फार व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ मार्वलस एप्लीकेशन. When you start it, then you will complete the content. I'll tell you how to write. I'll write the complete content. मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी complete content. But in this video, we are just collecting the information of the format, how to write it. Okay? What is the exact and correct format? कि इसका सही प्रारूप क्या है? In Hindi we will speak, because there is a problem of some of the students that we are not able to get it completely in English. Ma'am, please use Hindi. So I am speaking also in Hindi for your own convenience. Okay. Then come to the complementary clause. After completion of the content, जब आप completion करेंगे, content को complete करेंगे, then you have to drop a line once again. Okay. And after completion, you will mention thanking you. नंबर 6 के बाद आपको लिखना होगा थैंकिंग यू. आई हैव नॉट रिटन हियर, मैंने नहीं लिखा है. जब मैं एप्लीकेशन लिख करके दिखाऊंगी देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट. थैंकिंग यू, बट यू जस्ट नोट डाउन दैट थैंकिंग यू. देन यू ड्रॉप अ लाइन. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज? व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कंटेंट, we mention that who we are. in हिंदी एप्लीकेशन, अगर हिंदी एप्लीकेशन की बात करें तो आप उसमें लिखते हैं भवदिया. संस्कृत की बात कर रही हूं मैं, संस्कृत की भी बात कर लेते हैं. भवदिया लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी लिखते हैं. इस तरीके से कुछ हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है. सो यू विल राइट योर्स ट्रूली. ओके, योर्स ट्रूली. ट्रूली एनीवन कैन राइट. सिंसियरली एनीवन कैन राइट. faithfully anyone can write. But be conscious about obediently, because it is only written by a student when he is going to submit an application to the principal, to the class teacher, to the clerk, to anyone. Obediently मतलब आज्ञाकारी. ये केवल एक विद्यार्थी के द्वारा ही दिया जाता है obediently. अदरवाइज बाकी के जो लोग हैं वो truly, sincerely और faithfully को यूज करते हैं. Is it clear to you? Now move forward. Sender's name or sign. Sender. Who is sender? You are the sender because you are writing application. आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप ही सेंडर हैं. हिंदी में कहते हैं हम प्रेषक, भेजने वाला जो होता है. तो सेंडर का नेम, सपोज दैट आई एम शिल्पा, आई विल राइट हियर शिल्पा, देन आई विल साइन अप. बट द साइन शुड बी विजिबल इन द कंप्लीट. ओके, जो मैं हस्ताक्षर करूंगी वो हस्ताक्षर मेरे बिल्कुल विजिबल, दिखाई, दर्शनीय, देखने योग्य होने चाहिए कि सामने वाला देख पाए. तो दैट इज क्लियर टू यू. या तो आप नेम लिखें, अदरवाइज यू हैव टू साइन अप. After that, you have to write it. If you wish to write, you can write your address also. Okay? अगर आप लिखना चाहें तो अपना एड्रेस दे सकते हैं. क्लास और सेक्शन भी दे सकते हैं if you are writing as a student. Clear?
Then come forward the date. At last we mention date, and what should be the date? Date should be always written in American format. American format, I told you that firstly you have to write the name of the month, April 28, then use the comma, then 2020, that is timing period. Moving on, तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन के फॉर्मेट को कॉम्पिटिटिव लेवल पे और एकेडमिक लेवल पे यू हैव टू कंप्लीट इट. इफ यू हैव गॉट इट परफेक्टली, यू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको समझ में आया है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ पाए हैं इसको, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स वेयर आर द कॉम्प्लिकेशंस, कि कहां आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है. अदरवाइज दैट इज वेरी गुड. Keep studying, keep practicing, and don't forget to share it to your friends so that those are not in touch, they could get the complete information. Share करना मत भूलिएगा आप अपने friends को, जिससे कि वो पढ़ पाए इसको जहां भी रह रहे हैं. Okay, and don't forget to subscribe and like also. Thank you very much. I am giving to you homework, just wait for.